A very good afternoon to all the students. Welcome to yet another session of Masterclass workshop. This is session 9, and we have four speakers today. The first speaker today is Miss Kashyapi Ghosh. She is pursuing her PhD in English literature from IIT Tirupati. Her topic is to do or not to do English literature. Are you here, Miss Ghosh? Do we have Hello. Miss Ghosh? Am I, Yeah, uh, yeah, am I yeah, yeah, audible? yeah, you're audible to Okay. us. Yeah. So shall I start? What is it? Yeah, you can start. Uh, can I share my screen? Yeah, sure. Do you need to go to the present now option which will Okay. appear Okay. on. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Is my screen visible? Yeah, now it's visible. Okay. Okay. So hello everyone. Is it mandatory that I turn on my video? No, it's not mandatory. Okay. Thank you so much. So, hello everyone. I'm Kashyapi Ghosh, and currently I'm pursuing a PhD in English from IIT Tirupati. So it's a third generation IIT, not one of the first generation ones. But I would also say that it's no less than any of the other IITs, and it's growing, and I'm sure we'll be in a better place in the next 5 years. So I would like to thank Masterclass. I don't know, they're called coordinators maybe. Debashrita got in touch with me, and that's how it all started. So I would like to thank her for taking such a brilliant initiative, and helping out people who are kind of who are unaware, who are kind of lost, who don't know how it is. Their parents might not be knowing how to get through uh, higher education. So I think this is a very good initiative for such youngsters. Thank you, Debashrita and team. So now I'd like to begin and kind of walk you through my experience of studying English. More than whether to do or not to do English is like just the title, but I would like to walk you through how my experience has been in studying literature. So I've planned to keep it really short and crisp and not extend it a lot. So please forgive me if it's too short, but I don't want to put in excess information, provided that we are talking to people from class 9 to class 12. I don't think they really need to know a lot, but just the basics so that they can kind of start moving in the direction that they want, or kind of they get the direction they want to in their life. So I'd start by kind of a few points that we should remember while studying English. So whenever you want to study English, people usually ask you whether you're excellent in English, or you write exceptionally well, or you speak exceptionally well. But I think, as someone who has been in this field for around now 7 to 8 years, I don't think speaking or writing excellent English is the prerequisites of studying English. You can write average English, you can speak average English. I think it's a process. We need to understand that you study English and you just don't become any big shot in a year or two. You just need to do it as a process, that okay, this is what I'm doing, and I need to do it for, I need to have that kind of dedication towards my subject. More than being excellent, I think you should proceed to excel in your field. And the second more important thing is, you may or may not take humanities in class 11 or 12. I presume.
I'm still reading up on the new education policy, so there will be a lot of changes. So I'm not right now fully aware of it. But if there's a division from class 9 itself, then you might or might not, you can study science till class 11 or 12. Or if you're not willing, you can go jump into humanities. But to study English, I don't think you need to be a hardcore humanities person. You can just take any of the fields and then switch, because again there is a lot of taboo. I am Bengali, so there's a lot of taboo when you kind of switch from science to arts. So people really kind of give you a tough time. I myself studied science in class 11 and 12, and there was this big thing that you shouldn't switch to humanities, and humanities is not good enough and it doesn't pay you well. So, but you need to kind of stick to your beliefs or your passion for your subject. And that's precisely what I did. I studied 11, 12. I almost flunked in maths, I think. And, but I just chose to do my thing, my passion, and that's English. So again, patience and dedication. It's for every subject, not just English. It's important wherever you go in life to have patience and dedication towards whatever you're doing. So now I'd brush you through the career opportunities that you'd get when you study English. So again, 11 and 12, you study any stream. Then you may start taking a BA in English. Uh, I would prefer you to take any central university, because they have this huge possibility, or they have a big kind of exposure. If you are willing to move out of your house after class 12, or your parents are willing to send you somewhere other than a small college, I think it's very good that you get that kind of exposure. So there are a lot of career opportunities with English. I mean, people practically say that you can do a lot of things when you study English, but uh, I don't think when we studied, we got to know that there are so many possibilities. So first thing is higher education. You do your bachelor's, you do your master's, then you write net, and you net is, again I'll come to that later, and then you go for PhD. And the second thing that is really coming up now is content writing and academic writing. So content writing is basically where you write content for websites. And while I would suggest to people who are there, who are willing to study English, while you're doing your graduation, you do get a lot of time in between to spare. So I think you can really work as a content writer. You can do some part-time job, get some small money of your own, and that also kind of increases your confidence. And you don't have to ask your parents for money. That is also a big thing at that age. And third thing is teaching. Teaching, of course, you do your graduation, then you do your masters, and then you go for a B.Ed. B.Ed is again Bachelor of Education, which trains you to be a teacher. I would say that when you are doing this, you must complete your B.Ed before joining a school, because it trains you to be a better teacher for one, and second, you get paid really well with a professional degree like B.Ed. Next is civil services. Everyone knows UPSC, and I think it's very common. If I think there are some people from BHU, I think you'd really be knowing about civil service aspirants and how much they put in effort. So civil services again is a very broad field where if you take a bachelor in arts, you definitely have some brownie points to clear that. And the third thing is journalism, public relations. But journalism, definitely, please don't follow Arnab Goswami and his likes. But yeah, you can be into mass media, writing for newspapers. So there's a very good course by Statesman in Kolkata. I know only about that in Kolkata, where the Statesman company gives us a 9-month course in writing, and it's a rigorous course. So it's a good course. You guys might as well might find out what is the timeline and everything. Public relations is, again, it's a big thing now. And third thing is advertising. Advertisements where you write, you're a copywriter, so you get in touch with advertising companies, and you write for them. You become a copy editor basically. So that doesn't require
as much training, but again, uh, there is an institute in Bangalore. It's called Commune. I'm not getting the name exactly, but it's called Commune, and they do train you for advertisements and advertising and media agencies. So I have got a couple of contacts. If any of you are interested in that kind of stuff, you may get in touch with me later on. And about net exam, I would like to say again, it's considered as a big thing in academia that you need to have a net valid net certificate to be able to uh, go for jobs as assistant professors. So it's a basic criteria. Nowadays again we have GATE as well. GATE is basically graduate aptitude test in engineering, but they have again this time IIT Bombay has opened up for humanities and social sciences as well. So it includes English, sociology, philosophy, psychology, and linguistics, if I'm not wrong, and also economics. So that is also there. So the possibilities are numerous. It's just that you need to find out which is your calling. You where lies your passion. And one more important thing that I would like to say, which I will again say when I'm saying about the tips and tricks, that it's not actually trick but basic tips that you might require. So one thing is use the internet as widely as possible, not just scrolling through Facebook and WhatsApp, but the internet is the thing. I think you can do anything and everything. You can go around a number of things, a number of professors, get in touch with them, email them. Professors usually reply, even if they reply very late sometimes, but they do reply. Please keep in touch with your college or university professors, and you get to know more about what's going on in your field or how you can move about it. Stay in touch with your teachers. I think it's when we are in colleges or universities, it's often told that you people who are around teachers and professors, they are a bit like a, what do you call, bootlicker kind of. But I think it's important you be around them because they can be really good mentors. And if you find someone who's young and who's willing to kind of help you, then even better. It's the best thing you can do. And also the third thing is understand. You need to understand why are you studying English, and do you really want to do this? Or it shouldn't be like, okay, I'm just doing it because I want to do it because there's nothing better to do. It shouldn't be like that. Even if it starts being like that, at least towards the end it shouldn't be like that. While you are in the process, you should be able to enjoy it. And always ask around for more. Ask your seniors, ask your classmates, ask people around you who are studying English. Send Facebook messages, send WhatsApp messages. Be very very proactive in the starting, when you're kind of starting your career in this field. Because being in academia, one thing I could say that you really need to have a good amount of networking. It's very very important. And the final thing, that is for people who strictly don't want to be in academia, but they want to do other things like content writing. Please go and open a LinkedIn account. Very important. Second thing is, please look for internships. I think internshala is really really good when it comes to internships, and you'll be rejected right and left, but please hang in there and update your CV, update your job profile, and then you definitely land up with something or the other, and you can it's a good experience. That's all I can say, that you must have hands down experience if you're looking to work as a content writer or as a uh, academic writer, or as something as basic as, even if you are looking for a teaching job, you have things like an academy where they open up posts for English educators, and a lot of things are there. So that's why that's the first thing, is to use the internet, to just exploit it as much as possible. So that's it for my talk, and thank you so much. And also, if you have any questions, queries, please. I think there's a small mistake in the spelling of queries. Please forgive me for that. And please let me know your questions.
Thank you so much. Thank you, Ms. Ghosh, for really breaking it down to the basics. And I'm sure it was very informative for all the students who are willing to pursue literature in academia or otherwise. And do we have any questions from the students? Students, please put your questions in the chat box. Ma'am, what is linguistics? Okay, Uh, so linguistics is basically the study of language, and also there are other parts in linguistics. Even when you do your masters in English literature, you will have two papers of linguistics where you're taught about how to pronounce, how languages work, how evolution of language. So these are the things that they teach you in linguistics. And linguistics has a broad field. So if master class people can get in touch with someone from linguistics, and if there is a good base of students who are interested in linguistics, then we can have another session on linguistics, because linguistics is slightly different from literature, and but it's again a very broad field. There's a lot of scope in linguistics these days because of computer and because of natural language processing. You know, you have Alexa, so that's a lot of it is based on linguistics. You have this kind of interaction with linguistics and computers. So that is very, very interesting. So if you guys are interested, then some one of you can get in touch with someone who studies linguistics, and we can do a detailed analysis of how to go about in studying linguistics, because I am basically a literature student. Ma'am, I am from first year science. Okay. What will be the subject in graduation Okay, for so English? it depends. Again, if we have the new education policy in place, there will be a lot of changes. But if you go like when I studied science till class 12, after that when I went for my graduation, I took up history and sociology. But as a literature student, I would tell you to go for philosophy and sociology, because it's a good combination and you would learn a lot of things more. It's very philosophy is a very important subject. I think Dipali will come and tell you more about philosophy. But as a subject in English, you require a lot of other knowledge about other theories. So sociology and philosophy really comes handy to you. But if you're not interested, or you're really skeptical about it, I think it depends on the kind of combination your college offers. You can go for economics if you're more into numbers and that kind of stuff, or you can go into, I think, geography and things like that. If you are interested, if your interest matters the most, and of course the college you're enrolling in, what kind of courses they have, what kind of electives they offer, that is important. Like I think in BHU you study for 3 years, and only at the beginning of the third year you study your honors course, that is English. You start studying history of English literature and all that stuff. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. do we have any other questions from the students? You can unmute yourselves and ask, or you can put it in the chat box. I don't think we have any more questions. That's okay. Thank you so much for your time. Yeah, thank you so much. It's a pleasure. It's my pleasure. Thank you. Yeah. Moving on, the next speaker for today is Miss Sarika Singh. She is a research scholar at the Department of History, the Faculty of Social Science, BHU. Her topic for today will be शोध के क्षेत्र में इतिहास की महानता. Ma'am, are you here? Miss Singh? Uh, Ma'am, you're on mute. Ma'am, you need to unmute yourself. Okay. Yeah. Hello. Yeah, you're audible to us. Not Mahanta, Mahatta. Sorry, I'm so sorry about that. I misread that.
सबसे पहले मैं बात करूंगी इतिहास विषय की। इतिहास होता क्या है और इस विषय में आपको इंटरेस्ट किस प्रकार हो सकता है। जैसे इतिहास हम उन घटित घटनाओं को कहते हैं जो पहले हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं। और इतिहास के लिए सबसे पहले ग्रीक के लोग हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे। वहां ग्रीक लैंग्वेज में हिस्ट्री का प्रयोग पहले किया गया और ग्रीक में हिस्ट्री का अर्थ होता है बुनना, यानी कि अनुमान होता है कि ज्ञात घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं। इतिहास जैसे आप लोग जानते होंगे कोविड, अभी ये लेटेस्ट बात है कोविड की, ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे। तो अगर कोविड जो है इस पे रिसर्चेस किए जाएंगे तो ये एक घटित घटना हो गई, इतिहास ही हुआ। और अनुमान होता है कि जो ज्ञात घटनाएं होती हैं उसी को हम व्यवस्थित ढंग से बुनकर एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसा चित्र उपस्थित करने की कोशिश करते हैं जो बहुत सार्थक हो और सुसंबद्ध हो। मीन्स एक कह सकते हैं कि जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसी को आप सिस्टमेटिक तरीके से एक इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें जो कि एक पॉजिटिव वे में हो, सार्थक हो। इस प्रकार इतिहास का अर्थ हम देखेंगे कि परंपरा से प्राप्त जो, जैसे लोक कथाएं हो गई। लोक कथा जानते हैं आप लोग? हेलो, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? नैन्सी? Uh, Students, if you can hear, please respond. Either unmute yourselves or put a response in the chat box. हेलो, इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक की घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का एक कालानुक्रम होता है। मीन्स एक डेटा होता है, डेट होता है। आप कोई भी जैसे आप महाभारत या रामायण सीरियल देखते होंगे तो आप उसमें देखते हैं कि एक घटना घटित हो चुकी है, किसी का भी रोल प्ले हो रहा है। जैसे महाभारत में कृष्णा या अर्जुन या जो भी है, तो ये हमारी क्या है, एक इतिहास है ये। तो इतिहास के अंतर्गत हम बात करते हैं कि मानव की विशिष्ट घटनाओं का और प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का जो वर्णन है उसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास में हम मानव जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं पहले, उसका प्राचीनता से यानी कि एंशिएंट से लेकर के और नवीनता की ओर मीन्स मॉडर्न तक की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और इतिहास में आपको इंटरेस्ट किस प्रकार हो सकता है, जैसे आप कहानियां सुनते होंगे, लक्ष्मीबाई के बारे में सुनते होंगे, महाराणा प्रताप के बारे में सुनते होंगे, या आप कविताओं के माध्यम से, तो वीर गाथाओं के माध्यम से। तो ये जो वीर गाथाएं हैं किसने लिखी, क्यों लिखी, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां क्या थीं, आर्थिक परिस्थितियां क्या थीं, राजनीतिक परिस्थितियां क्या थीं, क्यों इस तरह के इतिहास को लिखना पड़ा, और आने वाली पीढ़ी को वो लेखक जिन्होंने लिखा या इतिहासकार जिन्होंने लिखा वो क्या बताना चाहते हैं। जैसे आप रेड फोर्ट की बात कर लें, लाल किले की, ताजमहल की, या और भी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उस पे भी बहुत सारे शोध किए जाते हैं, रिसर्चेज किए जाते हैं। इसलिए क्योंकि उस समय के जो शासक रहे इसे क्यों बनवाया, क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं कि इमारतों का निर्माण या तो वो कोई विजय करते हैं तब बनवाते हैं, या कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही वो इस तरह के कार्य, सिक्के ढलवाते थे तो सिक्कों पर उनके चित्र, उनके नाम अंकित होते थे। उससे ये पता चलता था कि इस राजा ने ये सिक्के चलवाए। या इमारतों से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि ये इमारत इस शासक के काल में बनाया गया। उसमें काल का भी वर्णन है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां क्या थीं, आर्थिक परिस्थितियां क्या थीं, इस सब का हमारे इतिहास में क्या महत्व है। इसलिए
इस पे शोध की आवश्यकता होती है, शोध किए जाते हैं, या वो बिल्डिंग जो बनी है, जो इमारत बनी है, उसमें किस तरह के मटेरियल्स यूज किए गए हैं, क्या उसकी डिजाइनिंग किस तरह की है, वो नक्काशी किस तरह की है, क्या वो मुगल काल की है या प्राचीन काल की है, या उसमें और भी ब्रिटिश काल आते आते क्या उसमें और परिवर्तन हुए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो इतिहास है, इतिहास को जानने के लिए हमें बहुत विस्तृत क्षेत्र सीमित से एक विस्तृत क्षेत्र की ओर जाना पड़ता है। हम सोचते हैं इतिहास जो है वो सबसे पहले, एक बात आप लोग जान लीजिए कि इतिहास जो है, जो घटनाएं घटित हो चुकी उसी का एक वर्णन है, एक फ्रेमिंग है, और उसमें उस काल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां उत्तरदायी। क्या किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछना है? नैन्सी, अमृता, क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हाँ मैम, एक्चुअली आई थिंक सब लोग बाद एंड में क्वेश्चंस पूछेंगे आई गेस। अच्छा अच्छा मतलब आप अच्छा। तो हम इतिहास को दो तरह से देखते हैं। एक तो वो इतिहास जो लिखा गया, और एक वो इतिहास जो नहीं लिखा गया, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, और दूसरा इतिहास जिसका लिखित प्रमाण मिलता है, ताम्रपत्रों पर, भोजपत्रों पर या सिक्कों पर। ये सब जो इतिहास की एक इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे कॉइन से मिलती है, जो भी उस समय शासक रहे हों, वो उस काल के जो शासक रहे हो, उन्होंने जो सिक्के चलवाए, उस सिक्कों पे इंफॉर्मेशन मिलती है, या ताम्र पत्रों पर, भोजपत्रों पर। इस तरह की जो चीजें होती थी, इसमें भी एक इतिहास छुपा हुआ होता है। और इतिहास के लिए सबसे जरूरी ये चीज होती है कि हम ये जाने कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे मन में हमेशा प्रश्न होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, यानी कि क्यों ये घटना घटी, क्यों ये शासक ने इसको बनवाया, या सिक्के क्यों चलाया गया, क्या कारण थे। तो हम लिखित इतिहास जो है, उसमें पद्य और गद्य दो तरह की चीजें होती हैं। उसमें वीरगाथा के रूप में अनुश्रुति या लेखक की पूछताछ से गद्य में रचना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार जैसे आप देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन, जब वहां खुदाई हुई तो मन के बर्तन और वहां की नालियां, पक्की ईंटें, ये सारी चीजें बरामद हुई। इससे पता चलता है कि वो जो सभ्यता थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, यानी वो एक नगरीय सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। और वो नगरी सभ्यता जो थी वो कितनी एडवांस थी, हमें खुदाई के माध्यम से, 1 मिनट, वो हमें खुदाई के माध्यम से ज्ञात हुआ। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो खुदाई करते हैं हमारी प्राचीन चीजों को। खुदाई में प्राचीन धरोहर मिलते हैं, सिक्के, मनके, हाथी दांत, या आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन जब पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि बहुत सारी ऐतिहासिक वस्तुएं हमें ज्ञात हुई खुदाई के दौरान। और हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि पर्सनालिटी, जैसे कि विशेष व्यक्तियों के बारे में, अकबर का नाम सुना होगा आपने, या महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा। इतिहास में इनको याद किया जाता है इनके कार्यों के लिए, इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें सदैव याद किया जाता है। तो आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत सारी पोयम्स भी लिखी गई हैं, यानी कि पद्य रचनाएं भी हुई हैं। उसमें उनकी वीर गाथा, मतलब कि उनके वीरता की कहानियां जो हैं, उसको एक पोयम के रूप में रखा गया है। वो भी हमारा एक इतिहास है। कहानियां, किस्से, पुरानी चीजें, मृदभांड, सिक्के, स्मारक। थैंक यू। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो है, ये जानने की कोशिश करना चाहिए इतिहास पढ़ते हुए, या इतिहास में अगर आपका इंटरेस्ट है इतिहास विषय में, तो
ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ये घटना क्यों घटित हुई, किसके काल में घटित हुई, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का मतलब समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, किस तरह के वस्त्र पहने जाते थे। जैसे आप वैदिक पीरियड ले लीजिए, वैदिक पीरियड में लोग जंगलों में रह करके जो वेदों का अध्ययन करते थे और श्रुति यानी सुन करके एक दूसरे से वो इस इतिहास को आगे तक ले जाते थे। लेकिन बाद में जब ये वैदिक पीरियड की समाप्ति होती है, उसके बाद आप देखते हैं कि एक दूसरे तरह की व्यवस्था होने लगी। सबसे पहले तो स्टोन एज था, पत्थरों का युग था, लोग जंगलों में रहते थे, पत्ते पत्ते पहनते थे और फल फूल पर निर्भर थे। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता के विकास के क्रम में मानव ने पहिए का आविष्कार किया और भी आग की खोज की। जो मांस वो कच्चा खाते थे, बाद में वो भून करके खाने लगे। इस तरह आप एक डेवलपमेंट देखते हैं, यानी कालखंड में एक डेवलपमेंट देखते हैं। कालखंड का मतलब हुआ एक निश्चित तिथि, एक निश्चित डेट। धीरे 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 जैसे कि आप देखते हैं प्रेजेंट टाइम में ही देख लीजिए, आप लोग आईआर न्यूज देखते होंगे। न्यूज में आप लोग हमेशा देखते होंगे कि इस मिसाइल का परीक्षण हुआ, यहाँ ऐसा हुआ। तो टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी जो है, नए आयाम उसमें विकसित होते जा रहे हैं। इसी तरह से मानव सभ्यता भी है। पहले उन लोगों ने जंगलों में रहना, कंदमूल फल खाना, गुफाओं में रहना, फिर धीरे धीरे आगे जाकर की उसमें एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये डेवलपमेंट फिर वैदिक पीरियड, फिर आप एंशियंट हिस्ट्री में देखते हैं बहुत सारे राजा महाराजाएं, उनका काल रहता है। फिर आप मध्यकाल की तरफ जब बढ़ते हैं, मुगलों कैसे तुर्क आए, कैसे भारत पे आक्रमण हुआ, तुर्क आए, अफगान आए, मुगलों का एक काल देखते हैं, फिर आप ब्रिटिशर्स को देखते हैं। तो ये जो है बहुत विस्तृत है इतिहास। इसको जानने के लिए, इसको शोध करने के लिए, इतिहास को पढ़ते हुए शोध की अत्यंत आवश्यकता है। नई नई चीजों के लिए, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हो गई, महाराणा प्रताप हो गए, हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, उसमें किस प्रकार के मटेरियल्स यूज किए गए हैं, या क्वाइंस पे बहुत सारे रिसर्चेस करने की जरूरत है। और मेरा जो शोध का विषय है वो है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस तो आप लोग शायद जानते होंगे। रिप्लाई प्लीज। यस। तो प्रिंटिंग प्रेस का मतलब, सबसे पहले गोवा में ईसाइयों ने 1550 में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं। जिससे क्या होता है कि प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा वो अपनी धार्मिक पुस्तकों का विवरण विभिन्न जगहों पर करते हैं। इससे लोग उनके धर्म के बारे में जाने। धर्म के प्रसार के लिए सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। लेकिन आप धीरे धीरे देखते हैं कि बहुत सारे हमारे रामायण, महाभारत और भी जितने भी किताबें हैं, जो आज हम किताबें पढ़ते हैं, वो सब किसकी देन है? प्रिंटिंग प्रेस की देन है। जो हम इतिहास आज पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो उसका एक माध्यम क्या है? प्रिंटिंग प्रेस है। और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? देवश्री, देवश्री, क्या आप लोग सुन रहे हैं मुझे? ठीक है, क्या मैं आगे आपकी आवाज आ रही है मुझे। अभी भी हम लोग सुन रहे हैं सब, लेकिन शायद सब म्यूट पे है, इसीलिए बोल नहीं पा रहे। अच्छा अच्छा। मैं चूंकि आप लोगों ने 15 मिनट कहा था, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में तैयार
तैयार क्या, शॉर्ट में ही मैंने बोला। और आगे मैं क्वेश्चन जानना चाहूंगी, बच्चों के मन में किस प्रकार के प्रश्न हैं, क्या वो इतिहास को लेकर के जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं किस प्रकार से वो जानने का प्रयास कर रहे हैं, या इतिहास के विषय में और क्या वो जानना चाहते हैं, इमारतों के बारे में या पुस्तकों के बारे में या वेद पुराणों के बारे में जो हमारा इतिहास है उसमें शोध के क्षेत्र में वो जानना चाहते हैं। ये सारी चीजें मैं एक बार प्रश्न के माध्यम से जानना चाहूंगी। अच्छा, किसी ने पूछा है हिस्ट्री एज ए, प्लीज रीसेंड योर क्वेश्चन। प्रोफेशन, हाँ, इतिहास के क्षेत्र में आप प्रोफेशन जानना चाहते हैं तो इतिहास का प्रोफेशन, क्योंकि अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं या मिडवल हिस्ट्री की या मॉडर्न हिस्ट्री के, इतिहास के किसी भी पहलू के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके प्रोफेशंस क्या क्या हैं, क्या हमें इस विषय में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसके बहुत सारे प्रोफेशन हैं। जैसे अगर आप सिक्कों पे रिसर्च कर रहे हैं, बीए एमए करने के बाद आप शोध में रिसर्च में एडमिशन लेते हैं पीएचडी कंप्लीट करने के बाद, अगर यदि आपका सिक्कों पर अध्ययन है तो बहुत सारे जो हमारे प्राचीन धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, वहां पे म्यूजियम में आपकी जॉब हो सकती है। भारतीय इतिहास, इंडियन काउंसिल ऑफ, एक मिनट, दिल्ली में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है जिसमें शोध से संबंधित बहुत सारे कार्य किए जाते हैं और उसमें भी बहुत सारी पोस्ट आती है। एज ए प्रोफेसर हर यूनिवर्सिटी में समय समय पर विज्ञप्ति आती है, उसके माध्यम से आपका चयन होता है। और ये फील्ड, चाहे आप टूरिज्म टूरिज्म से भी इतिहास का जो स्कोप है, स्कोप के बारे में हम चर्चा करते हुए आपको ये बताएंगे। सबसे पहले तो आप प्रोफेसर के तौर पर, दूसरी चीज बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं जैसे आईसीएसएसआर है, आईसीएचआर है, या और भी बहुत सारे केंद्र हैं जहाँ पे समय समय पर वैकेंसी आती है, वहां पे आप आवेदन कर सकते हैं और उसमें चयन हो सकता है आपका। और कोई क्वेश्चन? Students, you may unmute yourself and ask questions. लगता है बच्चे बोर हो गए। नो एनी क्वेश्चन? Entrance इसके regarding है। एंट्रेंस इतिहास के लिए, क्योंकि 12th पास के बाद, आप 12th करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो तो सोशल साइंस विषय का यदि आप चुनाव करते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय आता है, तब इतिहास में आपको यूजी, अंडर ग्रेजुएट या पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद फिर आप रिसर्च के फील्ड में आते हैं। इस तरह से ये इतिहास का एक यूजी, पीजी, देन पीएचडी, ये एक क्रम हुआ इतिहास में एडमिशन के लिए। और कोई क्वेश्चन? ओह, बट मुझे बंगाली नहीं आती।
लेकिन अब तो हर विषय में अनुवाद किया जा चुका है सारी पुस्तकों का, यानी कि सारे लैंग्वेज में इतिहास की बुक्स अवेलेबल है। तो आपको सब्जेक्ट से मतलब है, ना कि भाषाओं से। भाषाएं तो बहुत सारे गूगल ट्रांसलेटर है, और भी सारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के विभिन्न सारे ऐप आ चुके हैं। तो आप किसी भी तरह से करके इतिहास विषय का अध्ययन कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? यस, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद। पुरातत्वविद यानी धरती के नीचे से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं खुदाई के दौरान, वो होते हैं पुरातत्वविद, जो खुदाई करवाते हैं। तो पुरातत्वविद जो है वो इतिहास से ही संबंधित है, जिसके अंतर्गत जैसे आप हड़प्पा सिविलाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का नाम आएगा जिन्होंने खुदाई कराई थी, समय समय पर मनके मिले और हड्डियां मिली, एक नगरीय सभ्यता मिली। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इतिहास से ही रिलेटेड है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। और आशा है कि आप लोग इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे, आने वाले समय में अच्छे शोध करेंगे और एक अच्छी जगह पे जाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे इसके लिए टाइम निकाला, और मतलब आई एम श्योर बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बच्चों ने कोई रिप्लाई नहीं किया ना ऐसे? मैम एक्चुअली बच्चे थोड़े से शर्मा भी जाते हैं, मतलब बोलने से कभी कभी। हाँ, चलो थैंक यू। अब नेक्स्ट स्पीकर जो हो उनको आप बुलाओ, ठीक है? Moving on, the next speaker for today is Miss Deepalee Rout. She's doing her PhD in philosophy at IIT Tirupati. Her topic is What's Next? Career Options After 10th and 12th. Ma'am, Miss Rout, are you here? Yeah, I'm here, Amrita. Yes, you're audible to us. Thanks for inviting me. And today I will be speaking about a general, I think a general issue that what should be a career after 10th and 12th. There is a small presentation which I want to present. Yes, ma'am, you can use the present now option. Can you see? Yes, ma'am, your screen is visible to us. Okay. So usually we are going to when we start our 10th or we are in 12th, we get a pressure that what should we do next? What is our how is our life going to be, or how is our academics going to be after this? What should we choose? Science, arts, commerce, and not many questions and pressures come to us. That what should we do with our life, with our career? So since I have passed through these phases and it has been a very essential and crucial phase in my life too, so I want to share some of my experience as well as guide some of you people to how to choose career efficiently and effectively. So what common mistakes usually students make is especially during 10th, what they do is they follow their friends.
since they were in school for at least 10 to 12 years, so they don't want to lose their friendship circle and all, so they follow their friends, they talk with them and they choose the path where their friends are going. And then second comes your parental pressure, your societal pressure, and then you have lack of knowledge of diverse career option, and of course you lack those advisors who can well advise you about your career, right? So these criteria play a very important role in your life for choosing your career. So what must be done here and how to avoid this mistake? So, common choices, as you all might be knowing, that after 10th you usually choose science, commerce, arts. It's not humanities, although, but it's taken as arts. There are some subjects which we consider as humanities. So, you will be astonished to know that there are other courses, streams other than the science, arts, commerce, which are there in India and all over world, like you can, yes, you can move forward for your 12th, or you can go for polytechnic, ITI, paramedical, and short term courses are there. Polytechnic, you can say it's polytechnic, and ITI, you can say it is about electronical or technical kind of things are there. In paramedical, you go for a semi doctor kind of thing, where you can be an assistant for you may say for optical clinics and all. And you have short term courses like multimedia, tally, graphic, where you can go for your multimedia industries. But especially what we do is we go for intermediate and consider this last four as less valuable in some or the other way. But as per you can see to this new national educational policy, these vocational courses or the skill enhancement courses are given quite importance from your sixth class itself, where you learn coding. Coding is also a short term course over here. And then you are guided to have this vocational courses about electronics, technical things and gadgets. So skill enhancement has also been introduced in the school time itself. So now I think it this the subjects like polytechnic, ITI, paramedical courses or other short term courses are going to get equal importance as science, commerce and arts were getting. सो एनीवे, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम हम लोग को फोर्स किया जाता है कि हम साइंस ले, कॉमर्स ले, एंड बहुत कम रेयरली हम लोग को आर्ट्स के लिए पुश किया जाता है. सो इट इज बिकॉज कि हम लोग को ऑलरेडी पहले ही टाइम से हम लोग के पेरेंट्स को ऑलरेडी ऐसे एनवायरनमेंट मिला था जहाँ पर साइंस बहुत इम्पोर्टेंट था. जैसे कि अगर आप चले जाएं ब्रिटिश के टाइम पे, तो उस टाइम पे टीचर बनना या फिर लॉयर बनना बहुत बड़ी बात होती थी. एंड स्लोली स्लोली जैसे ही टाइम चेंज हुआ, हम लोग को इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ज़्यादा चाहिए होते थे, इसलिए हमने इंजीनियर डॉक्टर्स बनने शुरू कर दिए और उसी तरफ हमने कैरियर अपना मोड़ लिया. तो क्या होता है, तो वो जो ढांचा हम उस टाइम से है अब तक भी चल रहा है, इसलिए हम लोग डॉक्टर और इंजीनियर को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं और वही हमको समझ में आता है. तो क्या होता है, हम लोग को अलग जो जॉब सेक्टर्स होते हैं या फिर अलग कुछ कैरियर कोर्सेज होते हैं, उसको इतनी मान्यता मिलती नहीं है, इतना ध्यान नहीं मिलता है. इसकी वजह से ही बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ऑप्शंस होते हैं वो नीचे डिग्रेड हो जाते हैं, वहाँ पर बच्चे नहीं जा पाते, इसलिए वो गायब हो जाते हैं. तो आज तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो गए थे और आज भी पेरेंट्स मानते हैं कि ये तीन ही स्ट्रीम्स हैं. उनको ज्ञात भी नहीं होता है कि ये चार और कुछ और भी है जहाँ बच्चे अपना टैलेंट, अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं या फिर उनको अपना कैरियर बना सकते हैं. जो आप पॉलिटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल और शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं वो ज़्यादातर आपके जॉब ओरिएंटेड होते हैं, वो डिप्लोमा कोर्सेज की तरह होते हैं
3 साल 2 साल या 1 साल के अंदर आप कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें महीनों में होते हैं। तो आप उसको कंप्लीट करने के बाद कुछ अच्छे कंपनियों में आप जाके जॉब कर सकते हैं। तो और बेसिकली प्रॉब्लम ये रहता है कि हम लोग को ज़्यादा ज्ञात नहीं रहता कि कहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अच्छा रहता है, और जॉब कहाँ, अच्छी कंपनियां से कहाँ जॉब आ रही हैं। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं कि हम अलर्ट रहें, हम अवेयर रहें कि क्या कोर्सेज कहाँ मिलती हैं, एक कॉलेज की उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, वहाँ जाने पर मुझे फ़ायदा क्या होगा, और मैं कैसे वहाँ डेवलप कर सकता हूँ, मेरे मेरी कितनी अपॉर्चुनिटियाँ खुलती हैं, वो सब देखना पड़ता है। और फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू सी दैट व्हाट यू वांट। आप, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ही मेहनत करना होता है, और ऐसा नहीं है कि आर्ट्स ले लेंगे तो हम लोग बच जाएंगे मेहनत से, या फिर कॉमर्स ले लेंगे तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई और रिसर्च से बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हर सब्जेक्ट का अपना ही महत्व होता है, वो उतना ही मेहनत मांगता है। सबका अलग अलग, जो बोलते हैं ना, साइंस का एक अपना स्पेशलिटी है, वो आपसे एक टाइप का हार्डवर्क मांगेगा। Hello, ma'am, you're not audible to us. Hello, hello, ma'am, you're not audible to us. Just a minute, we'll just look into the technical glitch.
I'm really sorry to announce we're having a technical glitch, so we will be moving on to the next speaker. Our next speaker for the day is Professor Ujjal Sanyal. Is assistant professor at the Department of Commerce at Maulana Azad College. His topic is Wolf of Wall Street: To be or not to be. Sir, do we have you? Yeah, am I audible? Yes, sir, you're audible to us. Okay, thank you, Amrita. My name is Ujjal Sanyal, and currently I'm associated with Maulana Azad College. I am teaching there at the Department of Commerce. I have joined that college in 2019. Previously, I was in Umesh Chandra College. My total teaching experience is 12 years in the field of commerce. Today, I'm here to encourage some of you uh, to choose commerce or to make you feel encouraged why you should take commerce or why you can take interest in that subject in your future course of action. Let's start my presentation. Uh, okay, is the presentation visible? Am I? I'm sharing the screen. Yes, sir. Yes, sir. Your presentation is visible. Okay. Okay. The first slide means the why you should choose the subject of commerce, or what is the relevance of this subject in our country or throughout the world. You know, uh, when you open the newspaper, when you want to know about the situation of your country, what indicates that your country is growing or not growing, what indicates that you are in a developing phase or you are in a development phase, whether it is a struggling country or whether it is a in emerging economies in the world, that thing is indicated highly in the stock market, share market, which is known as the biggest indicator for the development of any country. Or you have heard the term gross domestic product, that is a GDP. So this GDP and the stock market or the share market is something which is wholly, if not partly, wholly conducted or is in the management or in the hands of the students of commerce. He or she might be a graduate, or he or she might be a MBA or a CA, or whoever he or she is. His or her contribution to the country in the field of commerce is highly solicited, is highly necessary for the development of the country. So this is the first and foremost thing for choosing the subject of commerce. So in commerce, this is as I've used means as through which I can express the subject. Now, this is why should you choose the commerce, engineering, medical, UPSC, photographer. There are different professions that are available in the market, but choosing commerce, why does it makes you different? Now, after your 10 plus 2, you are confused that which subject should I take, whether I'll get a good job or not. Yes, of course, the knowledge is highly necessary, but in spite of that, you have to have an employment, or you have to have earned the money for your future, for your family, for your career, whatever you have to have a marketable approach while choosing the subject. You have a lot of knowledge, but if you can't earn money, if you can't find job, that subject becomes irrelevant in the future course of action. At that time, you will find that no, I should have chose a better marketable subject, which can be which will be generating money for my future. So after 10 plus 2 in the field of commerce, there are various paradigms, that is the finance, the banking, the chartered accountancy, the company secretaryship, insurance, foreign trade. Different kind of avenues are there. Now the first and foremost thing after the 10 plus 2 is to enroll yourself in the bachelor, that is the BCom.
that is the minimum. That is the minimum criteria for starting your career. Whatever you do in your future, your masters or your MBA or CA, CS, various avenues, but BCom is the first and foremost thing that you need to get enrolled. Now, I have taught under University of Calcutta for 12 years, and I have known the subjects, various openings, various loopholes of this BCom. But what I'll suggest that if you do undergraduate, that is the Bachelor of Commerce from a standard university in India, you will find that your base will be very strong in the future course of action. Whether you go directly to the market for seeking the job after the BCom, or you go for further studies, a good undergraduate syllabus is always a pillar for your success in the future. So you must choose your undergraduate studies under a good university, if possible under a good college. That depends on your marks, on your luck, and especially after 2020, after according to the favor of the COVID-19. Okay, so after BCom, you have a avenue of you have a probability of choosing masters, that is the MCom. Now the students who have 55% or more, but I always suggest those students who have got 60% or more to choose their whether they will pursue their masters or not. Now, if you are particularly interested in the academic profession, like I was interested in the academic profession. If you want to be a assistant professor, if you want to be a lecturer, if teaching is your passion, then you must pursue the MCom. Now, if you want to be a market professional, if you want to be someone who is a hardcore corporate guy, then you can have other avenues. You must not choose MCom. You can go for MBA, or you can go some professional courses. Okay. So next, in the career of finance, you will find that MBA, as I've told, is one of the most leading, most foremost courses that are being chosen by the students of the commerce. The criteria for MBA is basically, if you want to get into the top 20, top 10 B schools, you have to crack the CAT, that is Common Entrance Test, which is conducted under the IIMs. There are different examinations where you can choose MBA for different schools like Narsimunji, SP Jan. There are different big schools, ICFI. They have different criterias of examination. You have to crack that, and you have to go for MBA. That is for the hardcore corporate sector. Now, MBA is something which you have to have the knowledge of a lot of subjects. Commerce is not at all a core subject. It is basically a combination of all the subjects that is available to manage a company or a firm. Like you can see the taxation, human resource management, auditing, mathematics, economics, marketing. There are lots of subjects, but don't get too scared of reading all those subjects. They are all related, but you have to have good knowledge of statistics and mathematics for the future course of action. So practically every firm needs a finance manager. So in the field of commerce, if you think that whether I'll get employed or not, you don't need to have a bit of doubt in your mind, because everywhere in the world, every state, every district, every every avenue of the world, you will find business is going on. So whether you are coming from the arts or you're coming from the science, you have to have the knowledge of the management. So basically, management is something which is highly required for any small or big firms for the future. So if you are studying commerce at the entry level, you are always one step ahead of the other streams which they are entering. The MBAs are being pursued by the art student, by the science student, for their future, for the good position in the company. But ultimately, if you are a commerce guy, you are always one step ahead. You know something more than they know in the future course of action. Now, this is a very small slide to show that main employer. Basically, whole world is the employer of the students of the commerce. You will definitely find a job, a small or medium or large scale.
These are small things. That is the government organization. You will find the government organization. There is a Indian Audit and Account Services, West Bengal Audit and Account Services, Public Service Commission, UPS Union Public Service Commission, Indian Revenue Services, Ministry of Home, Ministry of Finance. So each and every government organization need the students of commerce for the future. If you have to have a passion for joining armed forces, if you can't serve in the country in the field, you can serve as the account section in the armed forces services. There are large business firms, finance and leasing, banking, multinational trading houses, software consultancies. These are last 15 years. There has been a emerging field of KPO, that is knowledge process outsourcing. There is a company known as Genpact. They are highly recruiting the commerce guys all over the world. So these are the main employers. Now there are certain essential attributes that are needed for a future course of action. That is, you need to have certain amount of creativity in your job. Mm, it is physically demanding in the main sense. You have to have a good appearance, because ultimately if you are from the stream of commerce, you are selling yourself. So at the best price, if you want to sell yourself, you have to have a good appearance for the job interviews. You have to have in a formal outfit. This is very demanding. Ability to handle pressure. Of course, you are handling the money. This is the most precious material for any human being. So you have to have the ability to handle the pressure for your future. Communications is something 110% you need to require. Without communication skills, you cannot go ahead in the subject of commerce. You have to have 100% communication skills. You have to communicate with the lower level employees, like laborers. You have to have communicate with the managers. You may have to communicate with the CEO of the company. So communication skills is very important. Academic skills, if you are coming to the academic line, like assistant professor or in a lecturership or in a research line, you have to have good academic skills. Otherwise, you need a medium academic skills, but you have to have a 100% market oriented knowledge. Precision and skill is something very important, and business acumen. Now, if I talk about the pay packages, of course, I'm not here to say something about the pay packages, because this is too early for you guys to think about the money. But what government thinks about commerce is Mukesh Ambani. He earns a lot of money. He's world fifth or fourth, I guess, the richest man. So if you're a student of commerce, you must be aspiring some such of personalities. Okay. Next, I'll tell about banking. Bank is a very big sector which largely comprises of the commerce students. They are highly in need of the commerce students, because there are other arts and science guys are also applying for the bank jobs, but always you are ahead of it, because you have a backbone of accountancy, you have a backbone of finance, you have a backbone of costing. So commerce guys are highly required for the field of the banking. And banks are the most this is the backbone of the country. Even in the COVID-19, where Indian Railway stopped its wheels, the banks never closed. The banks were always open. So banking is a serious job, and you need to have a strong precision if you go in the field of banking. There are also very good pay packages in the private banks, in the international banks, even in the nationalized bank. They're paying quite high. You have a job guarantee, and you will definitely feel like Sachin Tendulkar when you will walk in the bank at 10 a.m. in the morning. Okay. So in banking, you will get basically the three avenues. The first is the clerical level. Next is the grade one. Next is the grade two officer and the manager. These are the hierarchy basically. The clerical level means their eligibility is basically 10 plus 2 or graduation. In the scale 1 or scale 2 officer, that is the PO officer, you have to have secured 60% in your graduation. Then only you can seek for the probationary officers, that is PO grade, scale 1, scale 2 officer. And then manager, it comes at the highest level in the banking system. In the entry level, you have to have plus 2 candidates required 2 levels, that is clerical and official level. It depends upon your capability which one you will crack. All India examinations are conducted as IBPS. If you go to the website of the IBPS, they are the recruiting agency for the basically the nationalized banks. The private banks have different criteria. And there is also RBI, Reserve Bank of India, who also
recruits highly from the commerce background. Okay. So next thing we need to talk is about the chartered accountancy, one of the most talked profession in the country. So if you are only an accountant, you may look like this, and if you are chartered accountant, that is the difference between the chartered accountant and normal accountant. Now, chartered accountancy is one of the strongest profession, one of the toughest exams that is being conducted in the country. It is equal to the IITs of the commerce. If you can be a chartered accountant, you don't have to look back in your for the no, for the future. So chartered accountancy basically comprises of the CPT, IPCC, and final course. Its eligibility is basically 10 plus 2. After plus 2, you can sit for the CPT, or after the graduation, you can directly enroll into IPCC. In after IPCC, your final course of action, you'll get all the details in the ICI website. I'm not going into the details. How to become a CA after IPCC? You have to get into an articleship. Articleship is something which is basically the practical knowledge. It gives you the practical knowledge of the market. You work under CA for 3 years, and in the last 6 months of the articleship, you can complete your final course. It is a very tough exam, but don't get discouraged. Many of the guys cracks it, and there is a rate of 5 to 15% throughout the country of cracking chartered accountancy exam. That's it. Next is that the ICI have these branches. You can have it in the internet site. The next thing I'll be talking about is CFA. This is another course, that is Chartered Financial Analysis. It is an international level course, and if you want to play in the foreign market, if you have ambition to go outside India, then the Chartered Financial Analysis is a very noble profession. I have an international figure for it. The nature of the work is basically you will work for the management, and the areas of CFA will be basically at the top level of the management. They will be seeking advice from you guys, the CFA guys. The career prospects are banking, insurance, large insurance companies, corporate sectors, leasing companies. They hire CFA at very high packages. Next thing I'll be going to talking about the ICWA, that is Institute of Chartered Institute of Cost and Works Account. If you are there is a manufacturing company, they hire lots of ICWA guys. They basically work for the manufacturing sector. It is also a same kind of course: foundation, intermediate, and final. Again, you can find in their website, ICWA website. You can find all the details. Next, I'll be talking about the company secretaryship. It is the second most cheered profession in the fields of commerce after chartered accountancy. Company secretaryship is the second most demanding profession in the fields of commerce. CS is basically a requirement for every company. According to the Companies Act 2013, every legal aspect is needed for the company, and every legal aspect is being conducted by the CS, that is the company secretaries of the company for the future of the company. Next, it also have quite a same kind of thing, that is foundation course, then the intermediate course, then the final course. Same structure. If you go to any of these things, they have the quite same structure. You can have a placement in the HR. You can have placement in marketing, administration, CEO's office, finance. Very good packages if you go for CS. There is another small thing that I want to add, is that there is another course known as CPA. It is also like CFA. It's an international level course. You can pursue it, but you have to have a master's degree to complete it. So it's a long way to go. In the future, you can search it in the website. CA versus CPA. CPA basically is international level, so they earn more than CAs in the international market. So if you go for the CPA course, you can have a global exposure. Insurance is a very strong sector where commerce guys are highly needed. Just a second. Yes, when commerce guys are highly needed, because insurance is something which is booming sector in India,
And in insurance, apart from the LIC, Life Insurance Corporation of India, apart from GIC, the private insurance players are highly remarkable, making mark in the Indian market, where commerce guys are highly needed. Insurance is something that is a basic requirement for human being, at least in the middle class, if not in the lower segment of the population. So selling insurance or in the insurance company, if you're working, that's a very high prospect for the commerce guys. In the insurance, they have different departments. They have legal departments, actuary department, accounts department. So LIC recruits a lots of commerce guys. You are always ahead of the other stream if you are going for insurance market. Nature of work is basically development, accounts, administration. These are basically the nature of the work for the insurance. Eligibility is basically the quite same. That is, you have to have a graduation, and after that, there are different kinds of exams that you need to have awareness where when to fill up the form. And there is a post called AAO, that is administrative officers, accounts officers, etc. So at the end of the day, in the digital era, for a student of commerce, there is a Maslow's hierarchy. There's a famous, you will go through if you if you go for the commerce, even in the management, in the science section. So you need to have a connection, that is the global connection, that is the communication skills, as I told before. That is belongingness needs, you have the Facebook, WhatsApp. Esteem needs Twitter, but ultimately what you need is LinkedIn, that is IN, that is LinkedIn. You need to have a job, you are marketable, you are selling yourself at the best price available in the market. Okay, so at the end of the day, what I used to say my students, that you must try to find your own voice. You have to decide for yourself what you want to do. I cannot decide, your parents can't decide, your friends can't decide. You have to decide, because the longer you want to begin, wait to begin, the less likely you are to find it at all. Means you have to find your voice much earlier, because the the delay you make to find your own voice, the less chances of getting your career success. So we all are salesmen basically. If you're science, arts, commerce, scientist, archaeologist, any field, any profession, we all are salesmen. We are selling different things. We are selling knowledges. We are selling ideas. We are selling products. We are selling electronics. Everything we are selling. So salesmanship is something which is highly needed in the profession of the fields of commerce. So thank you guys. This is my presentation. Hope you have liked it. It's open for the question. If you need to ask anything, that's it. Thank you so much, sir. That was a really informative presentation and a really nice utilization of the memes. Yeah. Do we have any questions from the students? I think one person has written, would like to just add with your presentation that commerce graduates may also have good scope for freelancing in areas of Yes, yes, income yes. taxation. Oh, okay, okay. Actually, the person who have told is, yeah, he's actually my sir. That is Professor Paul Shah. I have invited him to join the seminar because he is a mentor for me. So it's my Yes, presentation. So I wanted him to join it. So yes, thank sir. you, Yes, sir. sir. Thank you, Paul sir. Any more questions from the part of the students? Students, you may unmute yourselves and ask the questions. Not really a question, but I just wanted to thank him for these wonderful slide images, for the wonderful presentation. Apart from the informations, we really enjoyed these slides. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, we are living in a mimetic world. So memes are the means of communication for the future course of action. We need memes to entertain people, to engage people, and to know what the things are. Thank you, thank you. Okay, so I don't think anybody have any questions.
So I think all people are going for commerce, I think this. So they don't have any questions. I think, sir, you covered most of the questions that they might be having. Okay, thank you, Amrita. So I think my session ends here. Thank you so much for conducting this thing. Thank you so much, sir. We'll be moving back to Miss Rout. Her presentation was cut short because of a technical glitch. Ma'am, are you here? Yeah, Amrita, I'm here. Yeah. I'm sorry for the inconvenience. Actually, there was a power cut and I didn't knew it was on the inverter. So, so there was a power cut, and so I was disconnected from the uh, meeting. Um, okay, Yes, ma'am. so okay, I'm starting from the beginning again. Okay, so don't be bored. If you're bored, just let me know in between. Um, so everybody is like, where I left is that we have we can say, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि 10th और 12th हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतियों भरा ऐसा होता है, और हम समझ नहीं पाते कि हमें अपने लाइफ के साथ करना क्या है, आगे हमें करना क्या है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं, किसका सुनना चाहिए किसका नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवालों से हम घिरे रहते हैं। तो बेसिकली हम जैसे मैंने पहले बताया है कि हम कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जब हम एक चॉइस बनाते हैं, कोई भी हो, चाहे वो सब्जेक्ट के लिए हो चाहे वो अपने लाइफ के लिए हो। क्या गलतियां करते हैं कि हम जहाँ ज्यादा भीड़ होती है हम वहीं चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर शायद बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती हो, या फिर वहां पर हमारे दोस्त लेने जा रहे हैं तो दोस्त ले रहे हैं तो अच्छी ही बात होगी तो हम भी ले लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जहां हम अपने फ्रेंड्स को फॉलो कर लेते हैं या फिर क्राउड को फॉलो करते हैं कि वहां पर शायद अच्छा चीज मिल रहा है तो हम चलो वहीं पर हम पढ़ाई कर लेते हैं या फिर वहीं से सामान खरीद लेते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं। तो पेरेंट और भी होता है क्या, पेरेंट के प्रेशर में या फिर सोसाइटी फ्रेंड्स रिलेटिव्स के प्रेशर में हम लोग कुछ सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं या फिर ऐसे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं। तीसरा क्या होता है कि हम लोग के पास ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कि कितने सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल एक्चुअली होते हैं 10th और 12th के बाद। हम साइंस कॉमर्स आर्ट्स या फिर कोई ऑनर्स सब्जेक्ट्स हो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ और है भी या नहीं, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। और चौथा होता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइजर नहीं होते हैं, कोई बड़ा या फिर कोई फैमिली में कोई इतना एजुकेटेड नहीं होता है कि उतने फैमिली मेंबर्स नहीं होते हैं, छोटा फैमिली होता है कि उन लोग को पता नहीं रहता है कि उनको आगे करना क्या है, उनको इतना आइडिया भी नहीं रहता है। तो हमें ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए जब हम अपने लाइफ में कुछ चूज कर रहे हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो कुछ भी हो अपने लाइफ जो हम अपने लाइफ के साथ करना चाहते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू योरसेल्फ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर हियर। आप खुद को अहमियत दीजिए, आप सोचिए कि आप किस में अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि ये जॉब मुझे पैसा दे सकता है, वो जॉब मुझे वहां तक पहुंचाएगा, या फिर ये सब्जेक्ट इतनी पॉपुलर है मुझे भी ऐसे नाम फ्रेम मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, या इनफैक्ट मैं भी खुद उसमें हूँ, जो ऐसे जोश में मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया पर बाद में मुझे वो टफ लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं था कि वो 12th में कैसा दिखता है। जैसे बहुत बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं कि हम लोग पहले अलर्ट नहीं रहते हैं कि हमें लेना क्या चाहिए, अगर कुछ सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो कैसा है, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या स्कोप है क्या नहीं है। इसमें अगर कोई कॉलेज भी चूज कर रही हूँ, कौन से बोर्ड का कॉलेज है, कॉलेज का क्या स्पेशलिटी है, वो बहुत सारे फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है और हमारे लाइफ को बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहिए, हम अपने लिए क्या चूज कर रहे हैं उसको समझना चाहिए। और जो चूजिंग का एक क्राइटेरिया एक होता है कि हमें हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, बाद में हमें चूज करना चाहिए। जैसे कि आप एयरटेल का एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि पहले सब कुछ इस्तेमाल करो फिर
Airtel Chuno, something like that is a slogan. It's something like that. You have to learn about everything. Every field is essential. You have to learn about them and then find in which field you can put your 100%. You can fly with the colorful wings in the sky. जैसे आप पूरा खिल कर निकले उसमें, वो चीज आपको खुद समझना पड़ेगा। वो आपका कोई समझ नहीं सकता, आपका मार्क्स देख के भी कोई समझ नहीं सकता कि आप क्या कर सकते हैं। इसलिए आप अगर देखेंगे लास्ट बेंचर से भी टॉपर्स निकलते हैं बाद में। आज आज जो टॉपर्स हैं वो कल पीछे चले जाते हैं। वो यहीं पर डिसाइड करता है। तो आपको करना क्या चाहिए ना, आपको पहले कौन सा स्ट्रीम लेना है, क्या 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 स्ट्रीम अवेलेबल है मेरे 10th के बाद, ये 10th के स्टूडेंट के बारे में है। तो क्या क्या थिंग्स अवेलेबल है 10th के बाद उसे जानना है। पॉपुलर चॉइसेस है साइंस कॉमर्स आर्ट्स, जो सबको पता रहता है कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स 3 सब स्ट्रीम्स तो होते ही हैं। पर उसके अलावा आप अगर बहुत सारी अलग स्ट्रीम्स है जो आपको जॉब सेक्टर की तरफ भी ले जाती है, जैसे कि पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, पैरामेडिकल हो, और छोटे छोटे कोर्सेज भी है जैसे कि टैली, ग्राफिक्स या फिर कोडिंग, मल्टीमीडिया, ये सब हैं। तो जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल और बाकी जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर के लिए सब कोर्सेज रहते हैं, जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर वो सब के लिए आपको मिल सकता है, तो आपको डायरेक्टली वो जॉब की तरफ ले जाता है। तो आप सोचते होंगे कि तो ये नाम हमने सुना क्यों नहीं है, और अगर सुना है तो आईटीआई के बारे में या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में, वो मेरा पेट कितना भरेगा, हाउ मच money I will earn from it. The here students make a mistake is that students और parents का एक myth रहता है कि इसमें पैसे इनकम नहीं होते हैं। कहाँ क्या काम करेगा, छोटे मोटे दुकान में काम करेगा या फिर छोटे मोटे हॉस्पिटल में काम करेगा, ऐसे कुछ कुछ मिथ्स रह जाते हैं। तो मिथ ब्रेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि ना उनके पास उतना नॉलेज नहीं रहता या फिर अवेयरनेस नहीं रहता कि अच्छे सेक्टर में हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम अपने ही घोंसले में उतने दिन बंद होके नहीं रह सकते जितना हमें दिख रहा है, क्योंकि घोंसला ही पूरा दुनिया नहीं होता है। देयर इज अ होल स्काई एंड होल वर्ल्ड टू बी डिस्कवर्ड। तो आपको पूरी दुनिया के ऊपर अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है कि जहाँ पर अच्छा स्कोप निकले, जहाँ पर अच्छा एम्प्लॉयमेंट पोस्ट निकले, वहां पर हमें अप्लाई करना है। तो these things lead you towards a job sector. अब अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ही लेना चाहते हैं तो आपको आगे पढ़ाई करना पड़ता है। तो आप अगर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ले रहे हैं, फर्स्ट मेक श्योर दैट आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान आपको है। क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या पेपर्स वहाँ पढ़ाए जाएंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसका कितना पॉपुलैरिटी है, क्या उसका आउटकम है। जैसे कि आप साइंस ले रहे हो और एक्स कॉलेज में आप जा रहे हो, तो उस कॉलेज में साइंस के प्रति उनका कैसा अचीवमेंट है, क्या अचीवमेंट है, उनका सक्सेस रेट कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, कैसे पढ़ाया कैसे जाता है, टीचर्स, फैकल्टीज कैसे हैं, वहां पर आप कैसे बेनिफिट होते हो, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। एंड सिमिलर थिंग्स अप्लाइज फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स ऑल्सो। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको ये सब देखना पड़ता है। फिर आप जाके जान पाते हैं कि हाँ, यहाँ पर मेरे टैलेंट की कदर होगी, मेरे कैपेबिलिटीज को पॉलिश किया जाएगा। फिर then you will like succeed in your way। तो फिर अब क्या होता है ना, आप जो चॉइस लिए होते हो वो आप निखर के वहीं से निकलते हो और आपका चॉइस सही निकलता है। आप बोलोगे कि हाँ, मैंने जो चॉइस किया था वो राइट निकला, या फिर मुझे जिसने एडवाइस किया है उन्होंने सही एडवाइस दिया था। पर हालांकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहीं पर कन्विंस हो जाते हैं कि उनके बच्चे ने यहाँ पर पढ़ाई करके टॉप कर लिया तो मेरे बच्चे भी कर लेंगे, या फिर मेरे भाई ने यहाँ पढ़ा था तो फिर मैं भी कर लूंगा। यू हैव टू सी, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ, योर
चॉइस, तो आपको ही उसमें काम करना है। तो आपका एफर्ट, आपका कैपेबिलिटीज ही आपके जो चॉइस है, आपके जो फील्ड है जो आप चूज कर रहे हैं उसी को प्रूव करेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कुछ पॉपुलर फील्ड हैं जहां हर बच्चे जाना चाहते हैं, जहां इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर आप मतलब ये मेडिकल करना चाहते हैं। पर उसके अलावा हमारे पास 600 से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा सकते हैं, डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, एथिकल हैकिंग, एरो साइंस, आईटी सेक्टर्स, उस तरफ आप जा सकते हैं साइंस लेने के बाद। इवन मेडिकल का क्या होता है, इफ यू सी जो लोग बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं साइंस में फील्ड पे, तो मेडिकल सोचते हैं कि एमबीबीएस एक है, बैचलर इन साइंस, मेडिकल साइंस, और आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा कि उसमें डेंटिस्ट भी आता है। तो आप इतना देखते हैं कि डेंटिस्ट है, एमबीबीएस है, फिर उसमें सर्जन बनेंगे या फिर न्यूरो साइंस, गायनेकोलॉजिस्ट, ऐसे कुछ बनना है। पर और भी उसमें सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा में है, आप आयुर्वेदा के डॉक्टर हो सकते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हो सकते हैं, फार्मेसी के, फिजियोथेरेपी के या फिर नर्सिंग के भी हो सकते हैं। और इन लोग की जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेदा हम हमारे एंशियंट इंडिया की एक धरोहर की टाइप की है, एक व्हाट इज एक ट्रेजर है हम लोग के लिए, पर वो कहीं खो गया है। और अगर आप देखें, अगर आप एनालाइज करें तो देखेंगे कि पहले हम लोग को केमिकल्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, धीरे 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 हम लोग को आयुर्वेदा की तरफ फिर से ले जा रहा है और एक बिजनेस किया जा रहा है। तो इसका मतलब आयुर्वेदा ही पहले से एफिशिएंट था, जो हमसे छीना गया और हम ही को फिर से बेचा जा रहा है। तो दैट डजंट मीन कि आयुर्वेदा कभी दैट मीन्स दैट आयुर्वेदा में भी स्कोप है, हम लोग फिर से वही रिटर्न कर रहे हैं। तो because of earlier influence of science or the material science you can say और chemical science, वो सब की इन्फ्लुएंस वजह से इसको इतनी तवज्जो नहीं दिया गया बीच में। तो अभी उन लोग को और भी अहमियत दिया जा रहा है और उसमें भी आप कैरियर बना सकते हैं। देन आप बायोलॉजी लेके एग्रीकल्चरल एरिया में जा सकते हैं, इकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, फिजियोथेरेपी में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स सेक्टर, स्पेशली स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप स्पोर्ट्स फील्ड में भी फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। हेल्थ टूरिज्म में रह सकते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं। यहाँ तक भी साइंस लेने के बाद भी जैसे सन्याल सर ने बोला कि बच्चे फिर भी एमबीए करने जाते हैं तो उसके बाद आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। वैसे ही आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन खुलते हैं साइंस के बाद, इफ यू टेक मैथ्स और बायोलॉजी। फिर अगर आप कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स के बारे में सन्याल सर ने बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिया है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट, फिर कंपनी सेक्रेटरी, रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, बैंकिंग, सीएमए, बजट एनालिस्ट, ऑडिटिंग, ये सारे जॉब खुलते हैं और कई सारे जिसके बारे में पहले से आप जान चुके हैं, बहुत सारे जॉब एरियाज खुलते हैं आप लोग के लिए। फिर आता है आर्ट्स, जिसे थोड़ा कमजोर माना जाता है, कि आर्ट्स को थोड़ा कमजोर माना जाता है कि वीक सब्जेक्ट्स है, फिर जो बच्चे कुछ कर नहीं सकते या फिर उनका परसेंटेज नहीं रहा था 10th पे इसलिए वो 12th में आर्ट्स ले लिए। ऐसा ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे मैंने खुद पढ़ाए हैं, मैंने खुद देखे हैं जिन्होंने 92% रख के भी उन्होंने खुद अपने इच्छा से आर्ट्स लिया होता है, क्योंकि उनका एक एम फिक्स रहता है, वो अपने आप पे भरोसा रखते हैं कि जो इस लाइन पे वो जा रहे हैं वो सही करके जा रहे हैं। तो आर्ट्स लेने के बाद आप फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, लिबरल आर्ट्स या फाइन आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म। और इसके अलावा तीनों स्ट्रीम के लिए ऑप्शन ये खुला रहता है कि आप उसके बाद +3 कर सकते हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी कर सकते हैं।
जैसे कि आप साइंस के बाद बीएससी बीकॉम साइंस के बाद बीएससी, कॉमर्स के बाद बीकॉम, आर्ट्स के बाद बीए, या फिर आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। पर बीकॉम और बीए मतलब आर्ट्स और कॉमर्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है कि वो साइंस की तरफ जाएं। बट साइंस वाले बच्चे थोड़ा चेंज कर सकते हैं, उनको थोड़ा लिबर्टी दिया जाता है इस सब में। फिर बीबीए, बीए, देन एलएलबी कर सकते हैं, फिर मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल के लिए जा सकते हैं, फिर वो बीएम कर सकते हैं, बीएफडी, बीबीएस, बहुत सारी कोर्सेज, बिजनेस स्टडीज, ये सब खुल जाते हैं ऑप्शन आप लोग के लिए अगर आप फर्दर एकेडमिक्स के लिए जाना चाहते हैं, या फिर फर्दर यू कैन से एक एक्सपीरियंस लेवल चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेवल ऑफ जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर यू कैन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड मतलब एकेडमिशियन होना चाहते हैं, या फिर एक अच्छा जॉब सेक्टर चाहते हैं, जैसे कि एक हाई लेवल हाई पोस्ट की तरफ हो, तब भी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जाइए। अदरवाइज आपके लिए प्लस टू के बाद या फिर 12th के बाद आपके लिए जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं, सो यू कैन अप्लाई इन वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स एंड गो फॉर दोज जॉब सेक्टर्स। तो अगर आपको ऐसे ही सिविल सर्विस के लिए भी आपको +3 की ज़रूरत होती है, तो सिविल सर्विस के लिए अगर आप एस्पायर कर रहे हैं तो फिर आप +3 कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चरशिप या फिर पब्लिक रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, काउंसलर, लॉयर वो सब करना होता है, तो आपको +3 कंप्लीट करके इवन आपको एमए भी करना पड़ता है, एंड आपको रिक्वायर्ड एग्जामिनेशंस पास करने होते हैं, एंट्रेंस हो या फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो। तो अगर मैं आऊँ अपने फील्ड को, जब मैं फिलॉसफी के बारे में अगर बोलूँ, तो आपको वो क्या स्कोप देता है, वह क्या है, और कि वो आपको क्या बेनिफिट दे सकता है, उसको मैं थोड़े से ही संक्षेप में बताना चाहूँगी। कि अगर मेरे बारे में पूछा जाए तो मैंने 10th एक आईसीएसई बोर्ड में से पास किया, और उसके बाद क्योंकि मेरा साइंस उस टाइम अच्छा हो रहा था, तो पेरेंट्स भी चाहते थे, तो मैंने अपना साइंस स्ट्रीम में ही अपना 12th कर लिया। पर वहाँ पर मेरा कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं फिजिक्स समझने में, मैथ समझने में थोड़ी दिक्कत होने लगी मुझे, और क्योंकि मेरा प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा, तो मैंने सोचा कि इस बार हम आर्ट्स ले लेंगे, क्योंकि मैथ्स भी अच्छा नहीं था, तो फिर हमने कॉमर्स के बारे में नहीं सोचा, तो आर्ट्स लेंगे। अब आर्ट्स में हम क्या लें, क्यों लें और किस लिए लें? तो ऐसे बोला जाए तो बाय चांस एंड बाय चॉइस मैंने फिलॉसफी को डाल दिया एज फॉर माय +3 परस्यू करने के लिए। मैं अपना फिलॉसफी चॉइस कर ली थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानना था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सुनती थी कि फिलॉसफी के बारे में बहुत सुनती थी, एंड बट थोड़ी नेगेटिव वे में भी बहुत सुना करती थी इस फिल्म्स में, या फिर कोई किसी के साथ डिबेट कर रहा है, सो दे वर लाइक अपना फिलॉसफी मत झाड़ो एंड ऑल दैट सच काइंड ऑफ डायलॉग्स आई वाज हियरिंग, सो आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट सब्जेक्ट इट इज, एंड and fortunately I came across such a subject while I was applying for my +3, and I joined, and it completely changed my life. First time I chose something which and it was like yes, for this was something which I nahi, which we all of us are doing in our life. Actually this is a subject which is considered to be mother of all subjects, क्योंकि ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, एक लॉजिकल थिंकिंग सिखाता है, आप कैसे आर्गुमेंट दे, कैसे आइडियाज फॉर्मुलेट करें, कैसे थ्योरीज फॉर्मुलेट करें, उसको कैसे अप्लाई करें कहीं पर, कैसे दूसरों का तर्क सुने और समझे और अपना तर्क रखे, और ऐसे कई सारे चीजों के बारे में ये आपको सिखाता है। इसको करने के बाद आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपको सही तर्क करना, सही विचार करना, और कैसे क्या थिंकिंग, कैसे पर्सपेक्टिव आप रख सके, अपनी विचारधारा और दूसरे विचारधारा की सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, वो सब भी आप इसमें सीख जाएंगे। आपको पढ़ाया जाएगा एक स्ट्रक्चर, पर आप इसके साथ एक वैल्यूज भी अपने साथ इनकलकेट कर लेंगे। इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें आप
देखिए, जैसे देखा जाए, आप अगर पढ़े होंगे जो 12th में है बायोलॉजी लेके, आप अरिस्टोटल के बारे में पढ़े होंगे, जो आपके फादर ऑफ बायोलॉजी है, वो भी एक फिलोसोफर ही है। अगर आप मेडिकल जब आप मेडिकल पास करते हो तो आप एक वर्थ लेके पास करते हो उसको, मतलब प्रॉमिस एक लेके पास करते हो, वो एक हिपोक्रेटिक ओथ होता है। तो हिपोक्रेट्स भी एक फिलोसोफर ही थे। तो क्या होता है, उन्होंने जड़ से ही सारे चीजों का अध्ययन किया है, अपने जो विचार है, अपने जो खोज है, अपनी रिसर्च है, वो एक अच्छे तर्क देखकर, अच्छे प्रूफ्स देखकर आर्ग्यूमेंट को प्लेस किया है, जिसके वजह से वो आज तक माने जाते हैं। यहाँ तक भी आप जब कुछ डिड्यूस करते हैं, अगर आज जैसे कि आप बोलते होंगे कि काले बादल छाए हैं, शायद बारिश होगा, कैसे आप जानते हैं? ये तर्क आप कैसे कर रहे हो? ये सब छोटी छोटी बड़ी से बड़ी तर्कें भी आपको सिखाई जाती है इस सब्जेक्ट में। यहाँ तक भी आप अपने जीवन में करना क्या चाहिए, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, सिर्फ अपने लाइफ में नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि बिजनेस सेक्टर हो, लॉयर सेक्टर, अपने जुडिशियल सेक्टर में हो, एडवर्टाइजिंग सेक्टर में हो, काउंसलिंग सेक्टर में हो, या फिर पब्लिक रिलेशंस में हो, यहाँ पर एडवाइजरी के स्टेज पर भी हो आप, तो वहां पर आपको सही गलत का तर्क, मतलब फर्क समझ में आना चाहिए। आप किसी को सही एडवाइस दे सके, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पॉलिश किया जाता है, ताकि आप फ्यूचर में अच्छे ह्यूमन बींग, अच्छे जजेस पोस्ट में भी आप हो, उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। तो अम, अम, अगर आप टीचिंग, इसमें ही टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो आप एमए कर सकते हैं फिलोसफी में, और आप लेक्चरशिप के लिए नेट एग्जाम देख के उसमें लेक्चरशिप कर सकते हैं। तो वेरियस फील्ड्स ओपन फॉर यू इवन आफ्टर टेकिंग फिलोसफी। ऐसा नहीं है कि फिलोसफी बहुत खराब सब्जेक्ट है या फिर उसमें कमजोर बच्चे ही जाते हैं। इसमें बहुत सारी थ्योरीज है जिसको आपको समझना है। इवन आप भी कभी अपने थ्योरीज दे सकते हैं, थ्योरीज कितनी वैलिड है, कितनी इनवैलिड है। और हर दिन हर वक्त हम लोग ये सब चीज करते रहते हैं अपने लाइफ में। तो इस चीज को हम बेहतर तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से कैसे करें, अपनी जिंदगी का हर एक टाइम, हर एक सेकंड किस तरीके से अच्छे से बिताए, हर जॉब को कैसे अपने, मतलब रेस्पेक्टिवली, लॉयली, फेथफुली, और जॉब जो डिमांड करता है उस हिसाब से हम काम कैसे करें, वही हम लोग कैसे दें, ये सब फिलॉसफी हम लोग को पहले से प्रिपेयर कर लेता है। तो इतना कह के मैं अपना आज प्रेजेंटेशन एंड करना चाहूंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बोल सकता है, पूछ सकता है। Ma'am, there is a question in the chat box. As a job यस। seeker, which field do you prefer most and why? It may be same as the one which you are pursuing already or maybe something else. सी हियर मैं ये बोलना चाहूंगी, आई वांट टू से दैट कि डू व्हाट यू आर गुड एट। ऐसे नहीं कि जिसमें आपको, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, पैसा कितना मिलता है देखते हैं, उस तरफ भाग जाते हैं। ऐसा करने से हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मे भी हम लोग के पास उतना नॉलेज नहीं होता है, या फिर उतना एंड्योरेंस या पेशेंस नहीं होता कि हम उतना काम कर पाए, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। सो एज I am a, if you are a job, if you are a job seeker, even I am a job seeker yet. So मैं बोलना चाहूंगी, pursue what you love, what you are good at, and obviously this is going to give you a good result. बिकॉज मुझे टीचिंग में जाना था, इसलिए आई प्रिफर डूइंग एमए, एंड देन आई ऑल्सो एंटर टू अ जॉब इवन, बट आई देन थॉट दैट मैं पीएचडी कर लूँ, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, फॉर बेटर जॉब पर्सपेक्टिव। तो I'm looking forward for my lectureship only. So if you are willing to do something like that, कि मुझे टीचर ही बनना है, या फिर मुझे लॉयर ही बनना है, या फिर कहीं कंपनी में मुझे एक क्या बोल सकते हैं, सीईओ के पोस्ट में रहना है, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, whatever you have fixed in your mind, whatever you are good at, do that.
and I wish you a lot of success. And you will succeed if you do it with your faith, with have faith on yourself, do 100% of your on your side, and just follow uh, what it feels like to you, and that will surely lead you to some job option. Pakka. I have experienced it, so that's why I'm telling you that you must pursue what you are good at. Don't run after things which other advise and you don't like that or you don't want that. मन मार के किसी को आज तक अच्छा नहीं लगा है, तो वहाँ जहाँ मन नहीं है वहां पर धन भी नहीं हो सकता है. So you can understand what I'm trying to say. Do what you love and love what you do. अगर आप बाय चांस कहीं फंस गए हो कि मैंने तो ऑलरेडी चूज कर लिया है, मैं क्या करूं, मुझे तो ये करना नहीं था, तो उनके लिए भी एक एडवाइस है कि अगर आप चूज कर लिए हो जो आपको पसंद नहीं है, स्टिल ट्राई टू लव इट. अगर अच्छा लगा, यू विल डू वेल. अगर अच्छा नहीं लगा, इट्स नॉट, यू आर नॉट इवन लेट इनफ टू चेंज योर फील्ड और डू व्हाट यू लव. ओके, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना लाइफ बाद में बहुत चेंज किया है. कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं उतनी पॉपुलैरिटी, उनका पैशन, उनका जो एम है अचीव करने के लिए. सो डोंट वरी, डू व्हाट यू लव. ओके. Thank you, ma'am, for the wise words. Love what you do. Definitely, I'm sure it will inspire all the students who are listening. Thank you so much for taking out time to arrange the presentation, to be a part of our presentation. Thank you so much for making me a part, okay, considering me a part of masterclass. Thank you. Thank you, ma'am.